Good morning all of you. जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି StudyIQ OPSC channel ରେ. I hope audio and video both are working fine. We can start. Good morning everyone. Good morning Afreen. Good morning Birbal. Manas. Good morning. Samir. Good morning. Pranam Akshay. I hope everything is fine. So we'll discuss today's current affairs. Today is 16 July and we'll discuss about the national international news as well as few Odisha related. So let's start. We have topics. Today's news: service sector will see linguistic secularism, cybercrime, GM crops, Article 19 new research philosophy, women in the workforce, untouchability cases are pending, and free trade agreement. So let's start. Service sector. Export cut India's trade deficit by 9.4% in quarter one. India's quarter one trade deficit falls to 9.4% in the first quarter of financial year 25-26, that is April to June. Quarter in the sense total 12 months go to financial year. चार्टा क्वार्टर आम डिवाइड करुचे वन क्वार्टर जोटा कि आप कहींपर 3 मासर एप्रिल मे जून. India's trade deficit narrowed by 9.4% to $20.3 billion compared to the same quarter last year, largely due to the robust rise in the services export. So basically, if you see the balance of payment, we have a current account, and current account we have this export and import of goods and services. So basically, due to increase in the export of services sector, our trade deficit or the current account deficit has been narrowed down. So what is the meaning of current account deficit? Current account deficit or trade deficit means we are importing more than our export. We are importing more than our export. That means it has been narrowed down. गोटे जिनस होची इधर आपण इंपोर्ट को कम करंतु. इफ यू कैन रिड्यूस द इंपोर्ट, और इफ यू कैन increase the export. So in this case, increase in export of services leads to narrowing down of trade deficit. Okay, key drivers behind this shift. What are the reasons behind this surge in the services export? Services exports jumped nearly 11% year on year, reaching about $1 billion or $98.1 billion in quarter one. That means the services services in terms of software services, services in terms of banking services, let's say business processing outsource jota hame BPOs boli koche, these are the services. Goods export modest growth, although in case of goods export has been increased, but this is only a moderate amount. Merchandise export rose by only 2% year on year, that is $112.2 billion. Imports also grew, but at a slower dip, helping reduce the deficit. So imports madhyam badhichi, but increase in import is lesser than increase in export. That means current account deficit or trade deficit has been narrowed down. Simply implications or significance. Services sector is increasingly vital because the Indian economy ko dekhibe, services sector is almost contributing 50 to 55% in the total GDP or gross domestic product. 50 to 55%. Like IT, business, consulting, finance, travel, telecom, healthcare have become primary cushion in fact, offsetting the goods trade shortfall. Better current account position. Experts expect the current account deficit ease to around 0.7% of GDP in quarter financial year 26 compared to the nearly 0.9% in quarter one financial year 25. This is what better current account position in the sense. Current account if you perform better, that means two things are important, or two implications basically. Go to Huji. You are bit of self-reliance. That means jota apno dependency apankar kom achi on other countries. That means you are importing lesser products. Second thing, you are exporting a bit of decent amount of goods and services. That means your export is in a decent side. That means your industries are also performing well. So that increases the confidence of the investor. Investor jo man ochandi semankara confidence definitely increase hobo. So they will start investing more in our economy. Export growth target in sight, with total export jodi apan dekhibe growing roughly 6% year on year to about to $10.3 billion. India remains on track to meet
1 trillion export goal for financial year 2026. तो 2026 सुधा आमर टार्गेट कौन अच्छी $1 trillion of export of what do you call export goal we can say. Bottom line, the service boom, particularly in IT, financial and telecom sector, is steadily closing India's overall trade shortfall, reinforcing the economy's resilience and bolstering its global competitiveness. This shows कि जदियो competitive देखो गोटे जिनस होची goods sector रे India रो किछि weakness गुडी को अछि in terms of manufacturing या industry आपण दे देखिबे आमे recently देखि जेम labor strike हेतिला काहे कि से माने labor strike करूछन या trade union strike was there. Why? Because they are demanding जो labor flexibility या labor laws flexibility सरकार करूची, that means compromising the labor rights. तो labor rigidity, land acquisition, there are certain problems जो गुडी को manufacturing या industries को flourish करिबारे या establish करिबारे किछि hindrances या restriction अछि. So if in case of services sector we are performing well कारण बहुत गुडे services sector अछि से माने SEZ रे गोटे office, I mean manufacturing sector is something they also need physical infrastructure, services भी physical infrastructure, but manufacturing cases रे things are different. Okay, जेमती services sector आपण देखिए जेमती health sector गोटे हमरो medical tourism या health tourism is one such factor. आपण देखिए Middle East countries रू they are coming to Delhi, Mumbai and Bangalore, Chennai, this kind of metropolitan cities for the treatment, for better hospital facilities. तो it's a kind of a service कारण एक तो tourism भी promote होउची plus हम countries को foreign exchange आसुची plus health facilities को सेवाने avail करूछन. So this is one type of services export you can say. So एही टाइप रो जते आपनकर services sector अछि, let's say IT sector, आपण देखिबे the African countries and other underdeveloped countries like India's जो software kind of जो companies गुड़िक जन खास करके TCS, Infosys, Wipro, these companies are simply exporting those services, software services in fact. तो ये कोड ना कोड इंडिया को जो डेफिसिट हमर अछि in terms of goods ताको रिकवर करिवारे हमको हेल्प करूची सर्विसेज सेक्टर टी. ओके, moving to the next topic, linguistic secularism, the need to protect India's linguistic secularism. Let's see. India is home to 122 major languages, 1600 plus dialects, making it one of the most linguistically diverse nation in the world. Linguistically diverse nation in the sense, after every 5 kilometers in this country, you will find a different kind of language. If not language, but dialects are different. In fact, अपना ओडिशा रे भी जति देखिबे सेही ओडिया भाषा, but if you cross 5 kilometers from your location, आपण देखिबे से कहिबार बोली या शैली सेटा चेंज हो जाए. That is known as the dialect. So the constitution recognizes this diversity and affords linguistic secularism. Linguistic secularism kind of secularism हमें जानी चाहिए कौन? This is related to religion, right? There is no such specific religion of a state. India रो कौन सी state religion नहीं, but we are supporting equally to every religion. हमें एग्जाम्पल भी देखिए और हमें कंपेयर भी करिए. The Indian secularism is positive secularism. That means government does support to every religion equally. कारण हमें ईद रे भी छुट्टी मनाउछु, हमें दिवाली रे भी छुट्टी मनाउछु, हमें गुड फ्राइडे रे भी छुट्टी मनाउछु. Similarly, if you see the Western countries, there is complete separation of state and religion. They do not have a state religion as well, but complete separation. But एठी जो linguistic secularism अछि, that in terms of language, हमें सबु language को promote करेगा. It's not that only single language will be promoted. A principle that ensures no single language dominates or is imposed over others. बर्तमान जो language policy को लेके चले ची debate कि हिंदी must be the language which should be promoted. In fact, if you see the Constitution of India as well, it has been clearly written, Hindi must be promoted. That, I mean, there is a difference between the promotion and imposition. But what the southern states and other non-Hindi belt states are saying, Hindi is simply imposed on us. This is their allegation. Okay. However, recent trends suggest an erosion of this principle, threatening the linguistic and cultural fabric of the nation. Right? तेणु ये जो जिनस अच्छी वर्तमान जो socio-political factors गुड़िक अच्छी, that seems to be
कि linguistic secularism कोठी ना कोठी compromise होची. That means the southern states are non-Hindi belt states. They are saying Hindi has been imposed on us. Linguistic secularism means the state maintains neutrality among the languages. There is no single language of a particular state, so they maintain a neutrality. That means every language is equally important for the state or the government. Similar to how religious secularism demands neutrality among religions. It ensures equal respect, promotion, protection of all languages, especially regional and minority tongues. So this is what it's saying, that promotion, protection of all languages, especially regional and minority tongues. The Indian Constitution supports how? Now, Article 2930, protection of cultural and linguistic minorities. On 330 कौन कहूची ना protection of culture and linguistic minorities. Suppose let's say Muslims मानकर language, Christian मानकर language, Parsi मानकर language. Okay, let's say Buddhism वाला या Buddhist वाला से मान किसी अलग language कहूचन. Plus ता सहित आपण ते देखिबे minorities in the sense कोड particular tribe जिंदी कोई language अछि. Its schedule recognizes 22 official languages, 3 languages formula aimed at fostering linguistic pluralism. यानी कि जिमती आमे कहूचे कोण कि सपोज ओडिसा रे इंग्लिश हिंदी ओडिया राइट सपोज तमिल हिंदी इंग्लिश सो जो 3 language formula is only to promote this diversity or to respecting the diversity. Why protect linguistic secularism? Preserve unity in diversity. Since we are a diverse country in terms of language, so we need to protect that. That means risk alienating the non-Hindi states and खास करके non-Hindi states मानकर ही ये allegation रहुचे कि ये जो secular linguistic secularism या language pluralism को कोटी ना कोटी end करा जाउची. Safeguard federalism. India's federal structure gives states the autonomy, and states माने जो autonomy derive करूचंती not by or not from the union, rather they are deriving their power directly from the constitution. That is the reason सेमान को हमें federal autonomy बोली कहूचे, to adopt and promote their own languages. Central imposition violates this autonomy and spirit of cooperative federalism. Okay. Cultural preservation. Many tribal and minority languages are endangered. Protection is essential to prevent cultural extinction. So many tribal and minority languages are endangered. Endangered in the sense ताको protect करा जाऊनी धीरे धीरे से माने लोप पाई जगले. Okay, protection is essential to prevent cultural extinction. जो भली भावरे हमें tribal मानंकु culture को preserve करिबा को चेष्टा करूछु. Equally, languages are also important. कि along with the community, we need to protect or conserve or preserve the language of those community. If you see the social equity, access to education, governance, justice in the mother tongue fosters inclusive development, especially for the marginalized groups. This is absolutely correct. That means we are familiar with our mother tongue. If we will be taught in our mother tongue, so it is easy to understand. So this is what social equity says. Suppose आपण गोटे जगह see the point is वर्तमान जो टाइप रो मशरूमिंग ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या जो टाइप रो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स या कन्वेंट स्कूल्स गुडी को पेरेंट्स माने सपोर्ट करूछन. ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज नॉट प्रमोटिंग बिकॉज गवर्नमेंट तो कहूची भाई आमे लोकल लैंग्वेज रे वर्नाकुलर लैंग्वेज रे आपण पाठ पढाइबु करिकुलम आमे सेट करिवु. बट व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग, दे आर सिंपली सेंडिंग to those convent and English medium schools, and those who cannot, they are simply sending those private schools in the Saraswati Sishu Mandir, Vidya Mandir, जो schools गुडी को. So the point is जो हमें चली ची कि भाई मदर टंग रे ही एजुकेशन को प्रमोट करो, that must be inclusive. जदि आपण देखिबे एजुकेशन सिस्टम को छोटो समय रो, यानी कि when I mean a child enters into the school, से समय रे जदि ताको जेकोनसी लैंग्वेज रे आपण ट्रेन करिवो, obviously मदर टंग रे ताको इजी हेई पारे बिकॉज से मदर टंग रो सिखी के आसीथिबो, बेसिक वर्ड गुडी को से जानिथिबो. सो तारो ग्रास्पिंग पावर अधिका रहिबो. बट छोटो बड़ो जो लैंग्वेज आपण ताको ट्रेन करिवे, सी और ही मस्ट ट्रेन्ड इन दैट लैंग्वेज, सो से ताको इजी हबो. तो ये गोटे डेफिनेटली जिनसो सोशल इक्विटी ना रे हमें एमती नोय कि
जो मेन स्ट्रीम जिनस अच्छी मेन स्ट्रीम को आम क्या डिप्राइव करवा से आप देखिए बहुत गुड़े स्कीम्स बर्तमान सरकार नहीं कि आसले इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल या जो स्पेशल रेसिडेंशियल स्कूल्स गुड़िक सरकार प्रमोट कर इंग्लिश इज बीइंग टॉट इन दैट स्कूल एंड सेकेंड जिनस सरकार भी यहाँ भी अलोकेशन या फंड स्कॉलरशिप दौरान इफ यू वांट टू स्टडी इन ए प्राइवेट स्कूल खास करके एससी एसटी पॉपुलेशन को पाई सो यू विल बी गिवन और आपनकर सब फी गुड़िक रिएम्बर्स करा जिवो So democratic participation, language barriers restrict citizens from engaging in democratic processes, especially public information is limited to dominant languages. सेम देखिए आपनकर languages barrier सेमती judiciary आपण देखिए जो justice deliver होचे आपण देखिए if you go to a lower court you will simply find the local language. Suppose ओडिसा रे lower court session judge या जो आपनकर district कोर्ट गुड़िक अच्छी सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यू विल फाइंड द मिक्स ऑफ ओडिया इंग्लिश ये सब चलती बट इफ यू गो टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट यू विल फाइंड ओनली इंग्लिश दिस इज व्हाट द जुडिशियरी सिस्टम इज ऑल अबाउट इन आवर कंट्री सो कॉमन पीपल कर एक्सेस रु बाहर रीच रु बाहर से जो लास्ट आमर जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे आई थिंक 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही डिड वन ट्रेमेंडस जॉब ही सेड जिते गुड़िक आमर अच्छी आमर जजमेंट्स गुड़िक ताकू नॉट बाइलिंगुअल रादर कि वर्नाकुलर लैंग्वेज रो ट्रांसलेशन करा जिवो सो दैट लोकल लेवल रे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे काम करुवा लॉयर या सेशन कोर्ट रे काम करुवा लॉयर दे मस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली से जजमेंट रे कौन था इनफैक्ट कॉमन पीपल इफ दे वांट टू एक्सेस दे कैन गेट द एक्सेस ऑफ इट तो ये काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन तेणु से आम केवल इंग्लिश को न करी प्रमोट न करी वी नीड टू प्रमोट वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एज वेल करंट चैलेंजेस टू लिंग्विस्टिक सेक्युलरिज्म चैलेंजेस कौन देखिबा push for Hindi in central institutions, entrance exams and official communication. So that is the reason this non-Hindi belt states are saying Hindi has been imposed. Marginalization of tribal and the regional languages in education and media. Marginalization of tribal and regional languages in education and media. Digital divide due to limited content in non-English, okay, yeah, non-Hindi languages. Slow recognition of additional languages under the 8th schedule, Bhojpuri, Tulu, Rajasthani, etc. आप देखिए फेसबुक भी लोकल लैंग्वेज कहूँ कि ओडिया रे फेसबुक देखा चाहूँगी या हिंदी रे देखा चाहूँगी या इंग्लिश रे तो सही टाइप रे आम यदि सब एप्लिकेशन या गवर्नमेंट रे जते स्कीम अच्छी इफ वी कन्वर्ट इनटू दैट वर्नाकुलर लैंग्वेज डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर आवर पीपल. Next देखिए साइबर क्राइम हाउ वल्नरेबल आर दिल्ली सिटीजन्स टू साइबर क्राइम. सो ओवरऑल हमें साइबर क्राइम को नहीं देखिए शॉकिंगली हाई फाइनेंशियल लॉसेस कॉन्टेक्स्ट देखिए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 डेलाइट्स लॉस्ट ओवर 452 crore to online scam 158% increase from the same period in 2023. 2023 रु 24 भितर जो परसेंटेज इंक्रीज है स्कैम और द साइबर फ्रॉड that is 158%. That means they have lost 452 crore. From January to May 2025, financial frauds reported by Delhi's IPSO unit totaled 473 crore across 140 cases covering digital arrest, sextortion, investment scams, etc. Skyrocketing case numbers, cybercrime incidents in Delhi jumped from 166 cases in 2022, 685 in 2022, nearly tripling. से अमिताभ बच्चन सबू फोन कॉल रे आगो आसुले आपन को अवेयरनेस क्रिएट करबा पई कि एभली कोनोसी कॉल आसिले जे कहूथिबो कि मु आपन को अरेस्ट हे गले तो सेतरे विश्वास करिवे नाही. In 2023 Delhi led the country with a cyber crime rate of 755 per 1 lakh people, significantly above the national average of 129. So Delhi capital is considered as highest in terms of cyber crime as for the 1 lakh population if you compare with the national average of 129. Okay, let's see types of different scams. The first one is OTP and bank frauds. Fraudsters pose a bank official or use a malicious link to steal OTPs and drain accounts. आपको ओटीपी दियंतु किछि एबळे आसीबो कि ए लिंक रे क्लिक करो इमीडिएटली योर मनी विल बी डिडक्टेड. डिजिटल अरेस्ट स्कैम
Scammers impersonate officials to extort victims. CBI officer, RBI officer. So 1935 crore lost nationally in 2024. Delhi police actively intervened, but still 1935 crore have been lost. Se officials who have been arrested. Okay, digital arrest investment, or you have to pay the money, then only you will be released in bail. Investment and WhatsApp scam, fake trading groups on WhatsApp duped victims and schemes totaling 5 crore. In fact, अपन देखिए stock market ना रे बहुत गुड़े group अपन Telegram हो, WhatsApp रे भी चाली ची. If you start transaction with them, definitely you will be the victim of this fraud. Sextortion and fake SIM fraud. Fake SIMs and deep fake accounts were used in sextortion and phishing. Over 60 complaints in one instance. 60 complaint gote time re diya jayithila. Fake loan schemes, scammers offer fraudulent loans, collect processing fee. Recent burst with 1.5 lakh loss reported. ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଦେବି, ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା. ଆପଣ କହିବେ ଠିକ ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ମିଳିଯିବ, 10,000 ର ପ୍ରୋସେସିଂ ଫି ଦେଇ ଦଉଛି, ତ 10,000 ଆପଣ ଦେବେ, 2 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ତ ଯୋଉଟା କି ଜିରୋ ଆସିବ, that means you lost 10,000. କିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉନି, you will only receive a message. Digital arrest ଦେଖିବା, cross border fake call centers target both foreigners and locals. Recent burst in Noida and Cambodia linked rings in captivating victims. तो ये होଉଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାଇबर କ୍ରାଇମ ର टाइप्स ऑफ स्कैम. Mitigation response effort कौन मेजर्स हमको नवा दरकार. First, cyber police expansion. Police expansion, that means personals, that means you need human resource first. Second, you need trained human resource, and this is a new type of challenge. So the police must be technologically empowered so that they can crack the code or crack the accused or जो माने frauds माने होचंदी. Second होची they need that kind of digital infrastructure as well. So each of Delhi's 15 district now has a dedicated cyber crime police station. That means cyber crime dedicated police station we must require. Awareness campaigns targeting seniors and students are ongoing. Example अपन लिखी परिवे जमती phone call हमें कला वेलको Amitabh Bachchan is saying something regarding this awareness. Rapid reporting and mechanisms helps in freezing transactions via helpline 1930 and National Cybercrime Portal immediately after incident. Whenever you feel your OTP or something has been compromised, immediately आपण एठी फोन करिकी आपनको बैंक अकाउंट को फ्रीज करि परिवे so that no money will be deducted. International bust. Delhi police have successfully dismantled cross-border scam operations and arrested key players. Next, देखिए GM crops confined field trials of GM maize to begin at Punjab University. देखिए recent approval. The review committee on genetic manipulation under the Department of Biotechnology granted Punjab Agricultural University permission to confine field trials of Bayer developed GM maize modified both herbicide tolerance and insect resistance. These trials are being conducted under biosafety level BRL1 and BRL2 with full oversight and regulatory compliance. So GM या genetically modified crops. So Punjab Agricultural University तरफରୁ ये स्पेशली गोटे GM maize यानी कि मक्का को उत्पादन करा जाउची. केवल वर्तमान कहा जाइछि कि केवल फील्ड ट्रायल रे ही हमें कल्टिवेट करूछु, कोनोसी कंजप्शन पई यूज करा जिवो नाही. ओके, एवं से कोन तार स्पेशल फीचर कोन यानी कि को प्रकार जीन्स को मॉडिफाई कराई जे जेनेटिकली मॉडिफाइड, दैट इज हर्बिसाइड टॉलरेंस. ओके, हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस. को प्रकार रो इंसेक्ट या पेस्ट अटैक करि परिवे नाही एवं हर्बिसाइड जो गुडी होवे से मध्य ताकू कोनोसी हैम्पर करि परिबो नाही. दिस इज व्हाट द जीन्स हैव बीन मॉडिफाइड एंड टेस्टिंग हैव बीन स्टार्टेड. Punjab Agricultural University Vice Chancellor Dr. Satbir Singh Gosal emphasized these are for the scientific evaluation only. काहेकि ना वर्तमान सुधा देखिए आगुरु हमें बीटी ब्रिंजल भी प्रोड्यूस करूचे, बीटी कॉटन भी प्रोड्यूस करूचे. बीटी कॉटन इज अप्रूव्ड, लीगली अप्रूव्ड. बीटी कॉटन को वर्तमान कॉटन रो प्रोडक्शन को इंप्रूव यानी कि इंक्रीज करिवारे यूज करा जाउची, बिकॉज कॉटन इज ए कमर्शियल और कैश क्रॉप. इट इज नॉट कंज्यूम्ड in food items in way, but BT brinjal is a food item. So citing the problem with respect to the food items
जो जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड आइटम्स गुड़िक अच्छी तेणु जेहेतु दैट इज हार्मफुल एंड देयर इज नो सच क्लियर कट एविडेंस कि यार इंपैक्ट कौन प्रकार हम ना ह्यूमन हेल्थ उपरे तेणु से भली जेहेतु कौन बर्तमान सुधा एविडेंस आसे ना रादर वी हैव एविडेंस व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस इट कैन डन टू द ह्यूमन हेल्थ से कौन प्रकार कंजप्शन यूज करा जाऊ नहीं सो दिस इज अनदर जीएम क्रॉप दे आर सिंपली टेस्टिंग मेज तो सेटा को बर्तमान यूज करा जाउची trial basis रे not for the commercialization. The trials aim to gather robust data to inform policymakers, farmers and society about the agronomic performance, ecological safety for these maize varieties. Okay? Yes, brinjal is not approved. Concern raised by the NGOs, civil societies, कौन concern देखो तो GM crops रो खास करके ecological health risk. The coalition for a GM free India, along with other environmental activists, is concerned about the excel regulatory consistency. Glyphosate is banned in Punjab, and they warn even confined trials carry risk of gene flow. यानी कि यदि clinically trial वे हला तो ये gene flow करी पारे, environmental contamination and long term ecological damage ही पारे. पुणी देखो NGOs are demanding public disclosure of the scientific review processes and full inquiry into the state government's insurance, that is no objection certificate. So first this GM maize must be given an NOC, then only they can start the trial. They argue that permitting glyphosate tolerant crops contradicts Punjab's ban, may deepen ecological stress. तो particularly GM maize रे जो प्रकार गोटे कंटेंट यूज करा जाउची that is known as the glyphosate, जोटा कि glyphosate को completely ban करा जाइछे. This is a kind of आपण कहि परिबे जो pesticide रे यूज करा जाउथला आगुरु. Regulatory safeguard and oversight, trials adhere to biosafety protocol. That means neither ecology will be harmed, environment will be harmed, human health will be harmed. Approvals, RCGM green lead the trial. A Punjab state level monitoring committee comprising PAU, Punjab Agriculture University scientists, agriculture officials, health authorities, etc. reviewed and approved the trial design and conduct. Okay, such trials are standard worldwide, built upon Punjab Agriculture University's extensive experiences in GM crop evaluation, nano urea, pink bollworm resistant cotton under strict control condition. तो आगुरु ये सबू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी has already done. तेणु तांको ऊपर हमर ट्रस्ट अछि कि से भी एटा को ट्रायल करिवे. नाउ बीटी या आपण कहि परिबे जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स गुडिकर मेन फायदा कोन हुए. फायदा होची जो जीन आमे चेंज करू, दैट मीन्स पेस्ट रेजिस्टेंस जीन इंक्लूड करा जाए. जेनेटिकली मॉडिफाइड्स कोन ना, सपोज गोटे क्रॉप अच्छी जोटा कि सब अधिक वाटर यूज करूची, अधिक आमे ताको कौन करिबा लेसर वाटर रे केमति से सर्वाइव करिवो. सेमिति गोटे प्लांट खोजिबा जे कि ड्राई लैंड फार्मिंग रे होतो, से जीन टी को आनी कि आमे एठी इंक्लूड करिबा. जनमी दैट जीन विल बी रिप्लेस्ड कि जेउ जीन टी अधिक वाटर डिमांड करूची ताको रिप्लेस करिबा से जीन सहित जोटा लेस वाटर डिमांड करू. सिटमेन ताको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोली कुआ जाउची, राइट. तेनु ये आमर हेल्प कौन करे ना, आमे जो जो क्लाइमेट चेंज वर्तमान होची, सपोज जमती डेफिशिएंट रेनफॉल तेरे आमर कौन दरकार लेसर अमाउंट ऑफ रेनफॉल रे केमती क्रॉप कल्टीवेशन हबो, ड्राईलैंड फार्मिंग रे केमती हबो. सो वी नीड दैट काइंड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. तो एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स तो अच्छी, जमती बीटी कॉटन रे आमे कौन करूचे टेक्सटाइल मिल्स को अधिका एंड चीपर अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करि पारुचे. दैट मीन्स वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन. एनवायरमेंटल सोशल डिबेट जदि आपण देखिबे, सिंपली आपण कहि परियो जमती बीटी कॉटन हो कि जीएम जदिओ क्लिनिकली सक्सेसफुल अछि कि इट इज गुड टू गो, बट तार जो इंपैक्ट ऑन द इकोलॉजी या सेफ्टी स्टैंडर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द ह्यूमन हेल्थ से भली कोनोसी जिंस रे कोनोसी क्लीन चिट जेहेतु मिले नाही. तेणु क्लिनिकली जदिओ से गुडी को सक्सेस हेतिला, बट ताकू कमर्शियल पर्पस रे यूज करा जाऊ नाही. यानी कि बीटी ब्रिंजल आमे कंज्यूम करू ना हो, से भली ब्रिंजल यूज करा जाऊ नहीं मार्केट रे या बिक्री हो नाही. बीटी टेक्नोलॉजी सिंपली जे देखिबे बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस ये गोटे टेक्नोलॉजी, ये होची बायोटेक्नोलॉजी रो पार्ट. एटा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस टेक्नोलॉजी जे फॉर्म ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन
used to make crops resistant to certain insect pests. It is one of the most widely adopted biotechnologies in the agricultural globally, especially in countries like India, the US, Brazil, and China. What is BT? Bacillus thuringiensis is a naturally occurring soil bacterium. तो से soil bacterium रू से gene को आने की हमें replace करूँचे. Produces cryoproteins that are toxic to specific insect larva. यानी कि से insect सेठी जदि बसिवो माने resistance एटा किछि तरह से करि परिबो नाही. Especially those of Lepidopetra, example bollworms and armyworms, and some Coleopetra, example beetles. Next, how BT technology works: gene extraction. Scientists isolate the cryogene from BT bacteria. Genetic engineering. This gene is inserted into the DNA of a crop like cotton or maize using recombinant DNA technique. एटा को मन रखते हुए RDNA technique या recombinant DNA technique ये बड़े-बड़े क्वेश्चन आसे कि को जेनेटिक इंजीनियरिंग को टेक्नोलॉजी की यूज करा जाए जतबले जीन को रिप्लेसमेंट करा जाए. Crop expression. The modified crop produces BT toxin in its tissue. When targeted insects eat the plant, the toxin disrupts their digestive system, leading to death. तेणु से इंसेक्ट मरी जाए. Okay, BT cotton देखिबा resistant to bollworm, approved and widely cultivated since 2002. BT brinjal resistant to shoot and fruit borer, approved by the Genetical Engineering Appraisal Committee. ये होची Ministry of Environment रा गोटे committee and जी की apex authority, the final authority to give the approval in 2009 but not cleared the commercial use. से कहले कि ठीक अछि भाई टेक्नोलॉजी ठीक अछि सब ठीक अछि कमर्शियल यूज पई हमें परमिशन दो नाही. इट वाज ए लॉन्ग डिबेट ड्यूरिंग दैट टाइम बट फाइनली हमें सेटा को कमर्शियल यूज करूना कि फार्मर को से बड़ी सीड्स दिया जाऊ नाही. बीटी मेज रेजिस्टेंस टू स्टेम बोरोड्स एंड फॉल आरबी वर्म अंडर कन्फाइंड ट्रायल्स, एग्जांपल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना. तो ये तीन प्रकार जिनसे वर्तमान हमको देखा मिलू. एडवांटेजेस देखो रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज यानी कि लेसर पेस्टिसाइड हमें यूज करि परिबा, प्रोडक्शन बढ़ी परिबो, फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िबो एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी अछि बट ताको हमें वर्तमान कमर्शियल यूज करि न. BT in India policy landscape देखिबा. BT cotton commercialized in 2002. Over 90% of the cotton cultivated in India is BT. Other BT crops not yet commercially due to public opposition, biosafety concern and political sensitivity. Regulator को माने अछन देखंतु Genetically Engineering Appraisal Committee under Ministry of Environmental, Forest, Climate Change. RCGM Review Committee on Genetic Manipulation under the Department of Biotechnology. Food Safety and Standard Authority of India for the food crops. Okay. Yes. Next, Article 19 देखिबा. The Supreme Court granted anticipatory bail to cartoonist Hemant Malviya, protecting him from immediate arrest in the case concerning his social media post featuring Prime Minister Modi, RSS figures and reference to Lord Shiva, but court strongly rebuked him. Justices Dhulia and Arvind Kumar described the post as inflammatory, undignified and immature, cautioning that Malviya must not repeat such content. Bail to milla, but strict suniba ko milla ka to Supreme Court too. Warning on freedom of expression. The bench observed that right to free speech under Article 19 is being abused. Nothing that people say anything these days to anyone. तेणु जी जहाँ पारुची फ्रीडम ऑफ स्पीच ना रे समस्त को किछि भी समाने कहउछन. सिग्निफिकेंस कोन एक तो बैलेंसिंग एक्ट काहेकि फाइन लाइन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री स्पीच एंड रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक फिगर and religious sentiment kahaku तबे caricature करि परिबो नाही. Judicial message. The court is sending a signal that satire must maintain the standard. जेमति हमें ओपन माइक या स्टैंड अप कॉमेडी करूचे सेठी काहाकु भी किछि भी हमें कहूचे सो दैट मस्ट बी माने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो जिनसटा हमें कहूचे पब्लिक आउटरीच न होबा दरकार, पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट न होबा दरकार. राइट टू क्रिटिक डज नॉट एक्सटेंड टू gratuitous insult. Precedent under watch, the ruling could influence future cases dealing with political commentary and digital expression, especially in how courts interpret offensive content online. यदि अपना आर्टिकल 19 को देखिए, we have 6 freedoms
speech and expression, assembly peacefully without arms, association, union, move freely throughout the territory, reside and settle any part of India, and freedom to practice any profession, to carry on any occupation, trade and business. And it has reasonable restriction with respect to speech and expression, sovereignty, integrity of India, security of state, public order, decency or morality, contempt of court, defamation, incitement to offense. ये जिनस जमती कॉम्प्रोमाइज हम ना तेरे आपण राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन अच्छी, असेंबली अच्छी, बट सोवरेनिटी पब्लिक ऑर्डर जमती डिस्टर्ब हम ना, एसोसिएशन अच्छी आपण राइट्स, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इंटीग्रिटी जमती डिस्टर्ब हम ना, मूवमेंट एंड रेसिडेंस अच्छी, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक शेड्यूल ट्राइब को आपण डिस्टर्ब करेंगे ना, प्रोफेशन एंड बिजनेस अच्छी, पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड मोनोपोलीज ये जमती हम ना. सो दीज आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जहाँ को रखिकी आर्टिकल 19 को एक्जिक्यूट करा जाउछि. नेक्स्ट देखिबा न्यू रिसर्च फेलोशिप. प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप्स अनाउंस्ड द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. मन रखते बेटा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन tap into the expertise of retired scientists and seasoned researchers both in India and abroad to mentor and uplift research in state universities with the emerging research ecosystem. तो retired scientist professor मानंकु एठी मेंटरिंग पाई कुआ जाउची स्टेट यूनिवर्सिटीज मानंकरे. बो स्टेट यूनिवर्सिटीज खास करके स्टेट लेवल जो यूनिवर्सिटीज गुडी को अछि सेटिकार रिसर्च सेते स्ट्रांग नुहे. सो दिस रिटायर्ड साइंटिस्ट विल बी गिवन दिस रिस्पांसिबिलिटी. ग्लोबल टैलेंट इंक्लूजन, सो कि फॉरेन रू रिटायर हेकि आसीथिबो कि नेशनल लेवल रो इंस्टीट्यूट रिटायर हेकि आसीथिबो, दे विल बी गिवन दैट एक्सपर्टीज. Mentorship focused directly links with high achieving scientists and early career faculties, alignment with the national education policy and ANRF vision. Okay. Next, women in workforce देखिबा. Labor force participation in June 2025. Overall labor force participation dropped to 54.2% in June 2025. Major decline observed among the rural women. महिला मानक केस रे रूरल रे labor force participation rate fell to 35.2%, a drop over 1 percentage point since May. Okay, urban female labor force participation जो देखिए remains low at 22.9%, contributing to the national female workforce participation. Okay, yeah, women in participation rate just 30.2%. रूरल रे आपनकर पार्टिसिपेशन जनरली अधिका मैं आगुरु पे डिस्कस करिचे काहेंगी ना. रूरल इंडिया रे जो मेल वर्कर माने होचंदी दे आर सिंपली माइग्रेटिंग टू द सिटीज, जोथि पाई कि रूरल जो वर्क अछि सेमान को निजर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अछि, डेयरी से किछि काम अछि या गोटरी काम अछि, पोल्ट्री काम अछि, women are managing and handling. That is the reason rural area रे little bit of higher women participation in the labor force in comparison to the urban area. Plus urban area is the concern is safety, security ये सब भी रहउछि and they need more skilled one जो जहाँ की rural women को केस रे सेते सेटा को कंसीडर करा जाउ नाही. Regional decline in work participation. The Ministry of Statistics confirms decline in rural female labor force participation, underscoring deep-rooted gendered employment issues. अच्छा, कौन रीजन ही पर सीजनल एंड हाउस होल्ड इम्पैक्ट. सीजनल जून्स डिप रिफ्लेक्ट्स सीजनल पुल बैक फ्रॉम द एग्रीकल्चरल वर्क. कारण जून रे एग्रीकल्चरल वर्क यानी कि एंड ऑफ जून रो एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट हुए ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. ये गोटे फैक्टर ही पर. इनकम एंड हाउस होल्ड डायनामिक्स. इंप्रूव्ड हाउस होल्ड इनकम कुड लीड टू कि वुमेन मानन को मना करा जाउची कि आ काम करंतु नाही. ओके, with children and household responsibilities, married and urban women face greater withdrawal from the workforce. तेणु family responsibility, marriage ए सबु पाई सेमान को मध्य workforce रू withdraw करा जाउची. Non farm opportunities, rural non agricultural job growth remains insufficient, pushing women out of jobs that match their expectations and skills. Implication: economic growth without inclusive access. That means women are not participating. Women's participation remains far below male rate, that is 78%. Area specific strategy needed. Rural urban divergence and household factors call for targeted policies. Policy response जदि आपण देखिबे, boost non farm local opportunities, support child care, mobility, safety, encourage seasonal engagement and reassesses measurement tools. Untouchability cases are pending.
97% untouchability cases are pending in courts, that is Federal Data and SCST Act cases 2022. So in 2022, 51,656 cases have been pending, a staggering of 97.7%. These cases are reported from just 13 states. ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ 13ଟି ଷ୍ଟେଟରୁ ये cases ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ highest, Rajasthan and Madhya Pradesh, all these three are northern belt. Similar concentration seen in the ST Astro cities, that is 98.9% of cases from the same 13 state cluster. So see 13 state ru hi SC ST ro cases या untouchability act ru कोनोसी प्रकार cases रो समाधान नहीं, यानी कि solution बाहरुनी. Pendency and low conviction, NCRB data देखिए 2.22 lakh SC atrocity cases are pending. 4.6% of AC cases, 5.5% of ST cases pending. ये डेटा को आपण नोट करके रखिए, ताकि यूज करि परिबे, खास करके आपनकर जीएस पेपर 1 रो जो इंडियन सोसाइटी पार्ट अछि, यदि किछि क्वेश्चन आसे रिलेटेड टू pendency of cases or violence against the SC/ST community, this data you can use. 30 to 36% SC/ST Act cases by 21-22. यदि आपण देखिबे in some states less than 1%, especially in Maharashtra. कोर कंसर्न कौन, एक तो जस्टिस डिनाइड देखा मिलूँ, एक्सेस टू जस्टिस इज वेरी एक्सपेंसिव इन आवर कंट्री. जियोग्राफिकली इनइक्वालिटी अच्छी, खास करके नॉर्दर्न बेल्ट रे. डिलेड रिलीफ, विक्टिम्स अवॉइड जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर इयर्स. इनफैक्ट अंडर ट्रायल रे भी 10-15 वर्ष जेल रे अछंदी. रेकमेंड मेजर्स, एक्सपांड एंड एनफोर्स स्पेशल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपण कहि परिबे. पेंडेंसी रिडक्शन टार्गेट करबा को पड़िबो. प्रायोरिटाइज एट्रोसिटीज केसेस and improve conviction tracking, monitor भी करबा को पड़िबो. Free trade agreement देखिबा, progress of India and EU FTA talks, strong momentum underway, that is European Union एवं India भीतर गोटे चलीची. 10 out of around 20 chapters already agreed upon, covering areas like customs, trade facilitation, intellectual property and digital trade. Timeline अछि, by end of 2025 we will see India and European Union with a free trade agreement finally sign habo. Similarly, political backing जदि अपन देखिए, PM Modi and Ursula von der Leyen reaffirmed their intent to close the deal this year, reflecting shared strategic and economic priorities. सेमती अपन देखिए इंडिया एवं आसियान मध्य गोटे ट्रेड पैक्ट बर्तन चलीची. डिटेल्स जेमती जेमती अपन कोन आसीबो न्यूज रे, हम ताको कवर करबा डिटेल कोन. 2009 रो ही चलथला इनिशिएशन. And finally, however, after 9 rounds since 2022, discussion remains slow and ASEAN is accused of stonewalling, resisting meaningful liberalization. Okay. Finally, Odisha related देखिए. Odisha's new scheme to revive forgotten and neglected crops. Forgotten and neglected crops होची, जो seeds गुडी को आगरू tribals माने preserve करके रखुतले. Exactly, government of Odisha is again reviving that in terms of जदि आपण देखिबे कोरापुट एंड दोस ट्राइबल पीपल, पल्सेस हो, पैडी हो, ऑयल सीड्स हो, वेजिटेबल्स हो, वाइल्ड फ्रूट्स हो, एको पुणी थरे रिजुबिनेट यानी कि रिवाइव करा जाउची, सो दैट फूड सिक्योरिटी प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एंश्योर करेबा पाए. ओके. सेम देखिबे देवीगढ़ अवेट्स टाइगर रिजर्व स्टेटस. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टेक्निकल अप्रूवल इन अर्ली 2023 आफ्टर ए वाइल्ड टाइगर नेचुरल माइग्रेशन टू देवीगढ़ सेंचुरी. तो देवीगढ़ सेंचुरी को वर्तमान आपनकर दिया जीवो कोन टाइगर रिजर्व रो स्टेटस. ओके. एंड इट वुड बी थर्ड टाइगर रिजर्व जदि स्टेटस मिलिला आफ्टर सिमलपाल एंड सातकोशिया. ओडिशा एम्स टू बिकम ए ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्टर बाय 2047. सो हमर टारगेट अछि 80% EV penetration by 2047. So we are targeting 33% of power needs for renewables by 2036 and 50% by 2047. That means हमें green energy कौन करिवा, export करिवा by 2047. Okay, Odisha. Fine. MCQ solve करंतु फटाफट. फटाफट करंतु. फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु. आंसर कोन हबो? बी हबो आंसर. ओके. सिमलपाल एंड कान्हा नो, एटा होची आपनकर सिमलपाल एंड सतकोशिया. राइट. नेक्स्ट देखंतु. यूज आपनकर 1 and 3 एम टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल स्केल मोनोकल्चर ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स. इंडस्ट्रियल स्केल मोनोकल्चर ऑब्वियसली नो है.
थर्ड हूँ आपंकर 1 to 4 थर्ड अच्छी ओडिशा प्लान्स टू हैव 100% ईवी अडॉप्शन ओबियसली नॉट 100% आमर 80% अच्छी ओके सो ये हूँ आपंकर मेन्स रो क्वेश्चन बाकी आपण जो मैंने भी गुरुकृपा सेल मिस करिसेंती से पुणी थे कहि आज जदि भी आप चाहिए ऑन पर्सनल नोट यू कैन जॉइन बट प्रोबेबली देखा पड़ो ये डिस्काउंट अमाउंट मिलना ना नहीं तो जे इन लाइफ कोड की यूज करेंगे टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक अच्छे एंड सिमिलरली परिपूर्ण भी आमर थिला ठीक अच्छे सो पीडीएफ आपन को ये टेलीग्राम रे मिल जिवो फेसबुक इंस्टा रे जॉइन करि परिबे एंड आपनकर डाउट क्वेरी पचारि परिबे ओके थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन अनदर सेशन थैंक यू